For solving the external flow problem, the governing differential equation we know is derived from the Navier-Stokes equation. This equation is the fundamental equation used in the fluid dynamics. Uh, it is rho dou u by dou t equals to mu del u plus rho g minus dou p by dou x. It is further can be resolved in x, y and z directions. But for solving 2D problem, we only need it, its equation in x and y direction. Now we also have a fourth equation, which is continuity equation. So total, if we neglect z equation, we have three equations. Now we need to define our boundaries for solving 2D flow problem. So we have taken a square domain of length 40 units and breadth 17.5 units. In between there is a 0.5 unit thick sheet, rectangular sheet, which has length 6.3 units. It is aligned at 45 degree between the flow. Now we need to define our initial and bounding conditions. So at inlet we have taken u equals to u, which can be vary in the simulation problem, and it is a Dirichlet boundary condition, and uh, zero pressure gradient at inlet. For top and bottom boundary conditions we have taken no slip condition, which means the pressure gradient at the walls are 0, which is a Newman boundary condition, and at outlet we have taken 0 gradient velocity and pressure equals to 0. It is similar to the gauge pressure we take as 0, which can be a correct representation for the atmospheric pressure, which is same at every point. Also we have taken the thin thin rectangular sheet as a solid wall, which means zero pressure gradient and no slip condition. We have done simulation on two different types of mesh, but we done our analysis part on the same I explained above. हेलो एवरीवन, नाउ दिस इज आवर डोमेन जिसके लिए हम सिमुलेशन करने वाले हैं. दिस इज आवर फाइनल ग्रिड डिज़ाइन, और दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट और ऑब्स्टिकल जिसके लिए हम देखने वाले हैं कि फ्लूइड फ्लो में किस तरह से चेंजेस होने वाले हैं. और यह है हमारा जी मैस का इंटरफेस. सबसे पहले हम न्यू फाइल बनाते हैं और एज अ .geo फाइल उसे सेव करते हैं. नाउ वी हैव अ न्यू फाइल और न्यू इंटरफेस, और इस पे हम अपनी 2D डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जिसको हम आगे एक्सट्रूड कर देंगे, क्योंकि हमारा ओपन फॉर्म 2D के लिए वर्क नहीं करता है. सो वी वांट अ डिज़ाइन विच इज़ 3D, बट हम उसे केवल 1 यूनिट ही एक्सट्रूड करेंगे, जो कि हम उसको ओपन फॉर्म में यूज़ कर पाएँ एज अ 2D. सो दिस इज़ आवर स्क्रिप्ट. हम जो भी वर्क परफॉर्म करेंगे हमको इस स्क्रिप्ट में सब नोट डाउन होता रहेगा, और हमको ये सब हमको ऑप्शंस मिलते हैं जी मैथ्स में.
और हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पॉइंट, क्योंकि जीमेश में जब आप 2D बनाने के लिए चाहोगे तो वो ऑटो कैड या फिर कैटिया अगर आप यूज़ करते हो तो वो इतना ईजी नहीं होता है। आपको उसके लिए पहले पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स डालने होते हैं। और जब आप एक बार पॉइंट उनके प्लेस पे आप जनरेट कर देते हैं, उसके बाद आप लाइन सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आप उन पॉइंट्स को जॉइन करते हुए वो स्ट्रक्चर बनाओगे। सो यहाँ पे मैं अपने पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट्स डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए 10 × 15 का, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपने चारों पॉइंट्स यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। नाउ आई विल सेलेक्ट लाइन एंड देन इन पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करते हुए मैं अपना रेक्टेंगल बनाऊंगा। नाउ आई हैव कनेक्टेड ऑल द पॉइंट्स। नाउ अभी हमारा 2D स्ट्रक्चर बन गया है और इसको हम अपने स्क्रिप्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। सी, हमारे जो भी पॉइंट्स हमने जनरेट किए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स और उनको कनेक्ट करके जो भी लाइन है, तो उसके आगे भी हम देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को कनेक्ट करके ये लाइन बनी है। नाउ हमने डोमेन का के लिए रेक्टेंगल तो बना दिया है, बट अपने ऑब्स्टिकल्स के लिए जो हमको कोई एक ऑब्स्टिकल चाहिए जिसके लिए हम सिमुलेशन चेक करना चाहते हैं, उसके लिए भी मुझे पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। और मुझे एक स्क्वायर चाहिए जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। सो उसके अकॉर्डिंग नाउ अगेन वी हैव टू जॉइन ऑल द पॉइंट्स। और ये जो भी कमांड्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो सब हम अपने स्क्रिप्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। और दिस इज़ अवर डिज़ाइन जिसको हम फर्दर एक्सट्रूड करने वाले हैं 3D में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ वी हैव टू मेक इट सरफेस। सो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे प्लेन सरफेस एंड देन select the surface boundary and then select whole boundary and enter. Now we want to extrude, उसके लिए select करना है dz को 1 because हम 1 यूनिट के लिए ही extrude करने वाले हैं। Now we can see this is our extruded part. Now ये गलती से दूसरी डायरेक्शन में भी extrude हो गया है, so उसे delete करने के लिए we have to delete it from our script. Now delete it and we can see this is surface 1 and extrude 001 means 0 direction in x and y and 1 in z direction. Now we can see this is our part. Now we have to add layers and recombine. So and we can see there is one because we are using one layer. So you can check it is 1, 2 or 3 when you are extruding, right? So maybe your mesh will not work properly without it. Now we have to define all the surfaces. So for that, search for physical groups. Yeah, now select surface. Now we can give name for all the surfaces. We want the surface name and we want to define the surface because we will use it in OpenFoam. So we need to define the boundary conditions and all for every surface. So we have to define it. Now this is my part. So I have defined this as a part, or this is my top boundary. So I've gave name top and this is bottom. This is in and out. This is front and back.
Now we can make mesh directly. We have option for 2D and 3D mesh. If we select 2D, then it will make mesh on surface only. But when it is 3D, it can make surface on entire volume. Now we have to define the volume as well. Now we can see our script. These are physical surface, and we can see here the name and all things. We can also edit it. Now this is our final mesh. We can also change the color for this mesh, and we can see here. Now open this script, and this fourth number is defining the mesh size, and we can see for outer points it was 1, and for inner points it was 0.1. So because this is less, so it's mean the grade or mass will be less for these points, and we want it because we want more. Now save the file. To save the mesh file, we have to choose .msh. So search here for .msh file, this one. Now we can see there in folder, we can see this file is in form of .msh. Now save it. राइट, मैंने ये फाइल पहले से सेव करके रखी हुई है, सो आई एम नॉट. Now we have to export it. Now we have to select this version 2 ASCII because our OpenFoam will support only this format. Now just open. Now open OpenFoam folder, and then tutorials, and then incompressible, and then search for icoFoam and cavity folder. Now we can see there are many files inside the cavity folder. Now we have to copy this folder and paste it inside the run folder. Now we can see there is a transport properties folder inside the constant file. We have to copy and paste it outside the folder, and we will delete the constant file, and all these are files. We can check these are files, p file and u file. Now we have to put our mesh file into the run folder. Now let's go for OpenFoam, and we can use cd command for enter inside the folder, and ls command for the list of files or folders in that folder. Right, so I'm in OpenFoam file. We can check in all the files here. Now we'll go inside the run folder. We can check the list inside the run folder. Now we can check we have a cavity file inside this folder. Now if we check for the list inside the cavity folder, we can see there my mesh file and the system file and transport properties file. Now we have to change this mesh file into the form file. So for that we have to run gmesh to form.
and we will mention the file name. It will take some time, and after it we can see that uh, this process is ended. Now after this we can check there is a new folder which is constant. Now we have to edit or change our U and P files and also boundary files according to our mesh or according to our design. Now we can see here we have a constant file and there is polymesh file inside the folder. Now we will put our transport properties file inside that folder, and inside the polymesh folder we have boundary folder, and we can open it using notepad. We have to make change in this file. I am using another file जो कि मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, and we will change our file accordingly. And also we have to change inside the UNP folder. Change according to the old file. For front and back, change patch to empty. For top, put their wall, and for in it will be patch, and to bottom wall, and for out it will patch again, and for square it will be wall, because there we are considering it is wall, and so we will put the boundary condition accordingly. I'm not saving that because I have that file already. Now again, change for U and P, and because I have that file, so I'm just showing you how you have to change. Here you have to change according to your surfaces that you are using, and look at the boundary conditions. We are putting P at outlet is fixed value uh, 0, and at inlet it is 0 gradient. Now do it for U, and there's a default file, right, which is at left side, and we will put no slip condition for top, and bottom, and square. Basically we have assumed that wall, we will put no slip condition for all the walls. Now come back to cavity file and type icoFoam. Then after it it will generate some time files, which we can see here in the folder. Now go to control dict file, which is inside the system, and we can also change the time here, and we can also change the time interval. Let's change here and time. Now run it again. Now we can see here this is a cavity.form, right? This is a new file which is a .form file, and I've generated it because OpenFoam can only Paraview can only read the .form file, so we can generate this file using touch command. We will write touch.form, our file name, and then .form,
and it will generate a temporary empty file. Now we will run again for icoFoam, and it will be running for our 60 time. So it is ended. Now open the paraview and then search for your file. This is basically inside the OpenFoam folder and run folder. Now this is our cavity dot form, and this is our part, right? Now put there, we can change our visualization, and we can see here the mesh only and the surface only, and now we can see here uh, this is running for 60 time steps. Now we can do various things to visualize. Here we can see that every arrow will showing the direction of the flow, and we can also change the color for our visualization. Now this is running from 0 to 60 time steps, and we can see clearly the eddies here. We are going to make our mass more finer, right? So that we can compare our simulation कि इससे पहले जो हम सिमुलेट कर रहे थे वो, और अगर हम वही मैथ साइज और भी ज़्यादा रिफाइन कर देते हैं दैन सिमुलेशन में क्या डिफरेंस होने वाला है, एंड साथ ही साथ हम उस मैथ्स को और भी ज़्यादा रिफाइन करते जाएंगे, एंड वी विल फाइंड अ मैथ साइज वेयर our properties or our results are not changing furthermore. Means जब हम अपना मैथ साइज रिफाइन करते जाएंगे और हमारी प्रॉपर्टीज़ हमें और ज़्यादा एक्यूरेट मिलती जाएंगी, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर मैथ साइज वी विल सी दैट उसके बाद हमारा मैथ साइज अगर हम रिफाइन करते हैं और भी ज़्यादा छोटे मैसेज बनाते हैं, बट हमारी प्रॉपर्टीज़ में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है. सो फॉर दैट we have to go on Gmesh, right? You can see this is Gmesh software. Now अब हमको अपनी फाइल को ओपन करना है. Go to file, then open, and now this is my folder where I've saved my all Gmesh files. So मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि मैं किस फाइल को ओपन करने वाला हूँ. तो ये फाइल मैंने पहले से ही बना करके रखी हुई है, जस्ट मैं आप लोगों को बताने के लिए फिर से दिखा देता हूँ, और अगर आपने ये नहीं बनाई है तो आपको फिर से बनानी पड़ेगी. Now this is that file sq.go. मैं इसको ओपन करता हूँ. वी कैन सी दिस इज अवर मॉडल, राइट? दिस इज अवर डोमेन एंड दिस इज अवर ऑब्स्टिकल. सो नाउ how we are going to refine our maths, right? तो उसके लिए हमको जाना है स्क्रिप्ट पे. एज वी नो, अगर आपको कोई भी अपने मॉडल में एडिट करना होता है तो हम एडिट स्क्रिप्ट में जाते हैं. गो टू एडिट स्क्रिप्ट. नाउ वी कैन सी जो इससे पहले जो हम सिमुलेट कर रहे थे उस वाली फाइल में यहाँ पर 0.9 की जगह 1 लिया था, एंड फॉर हेयर यहाँ पे क्योंकि हमको अबाउट दिस पार्ट, राइट, नियर दिस पार्ट हमको कोर्स ग्रेन नहीं बल्कि फाइन ग्रेन चाहिए थे, इसलिए हमने जो अपना ग्रेन साइज था वो 1 से घटा करके 0.1 किया था. नाउ वी कैन सी
बट यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले ही मॉडिफाई करके रखा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे 1 किया हुआ था, जहाँ पे आपको कोड स्क्रीन चाहिए थे इस पर्टिकुलर एरिया में, तो यहाँ पर मैंने 0.9 कर दिया इस पॉइंट्स में। और जहाँ पर 0.1 मैंने रखा था फॉर फाइनल ग्रेन्स, उसको और फर्दर कम करके मैंने 0.09 किया। यू कैन सी। बाकी बाकी स्क्रिप्ट पूरी वैसी रहेगी, बट हमको यहाँ पे चेंज करना था। नाउ सेव इट, कट इट, एंड वी कैन मूव टू मैश। वी कैन सी 2D मैश, जो कि केवल सरफेस पर ही आपको दिखता है, एंड दिस इज 3D मैश। वी कैन सी these meshes are more finer. Now हमको जस्ट इसको सेव करना है एंड एक्सट्रूड करना है। दैन वी कैन सेव मैश। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि रिप्लेस इट, बिकॉज ये फाइल मैंने पहले ही सेव करके रखी हुई है, सो आई विल रिप्लेस इट एंड देन वी हैव टू एक्सपोर्ट। ओके, यहाँ पे आप फाइल का नाम डालोगे एंड देन यू विल चूज योर मैश फाइल .msh फाइल एंड जस्ट सेव इट। और सेव करने से पहले हमको या तो हम यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं, या फिर हम उस डायरेक्टरी में जाकर सेव कर सकते हैं जहाँ पे हम अपना ओपन फॉर्म फाइल रन कर रहे हैं। सो ये मैंने पहले ही सेव करके रखा हुआ, सो आई एम टू कैंसिल इट। ओके, फाइल सेव हो गई है, मॉडिफाइड हो गई है। नाउ जस्ट वी हैव टू मॉडिफाई in our constant folder and basically boundary folder, and then we have to check mesh and icoFoam in OpenFoam, and then we can simulate it. मैं हूँ अपने रन फोल्डर में, और यहाँ पे वो सारी की सारी फाइल्स हैं जो कि हमने OpenFoam में रन कराई हुई हैं। और उससे पहले जो हमने सिमुलेशन किया था वो हमने उसकी फ़ाइल ये है, इसमें ये सारी फाइल्स हैं, क्योंकि ये हमने सिमुलेशन किया हुआ है इसलिए ये सारी फाइल्स जनरेट हुई हैं। और अभी हम ये सब फिर से करने वाले हैं, क्योंकि जो फाइल हमने बनाई थी उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, अपना मैश साइज़ और ज़्यादा डिफाइन किया है, तो उसके लिए हमको फिर से वही सब प्रोसेस करना पड़ेगा जो कि हमने पहले वाले केस में किया था। बट ये मैं इस फोल्डर में ही भी कर सकता था, बट मुझे क्योंकि दोनों फाइल चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के मैं दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने इसके लिए दूसरी फाइल बनाई है फाइन कैविटी नाम से। और मैं इसको एक बार ये रन करा चुका हूँ, जैसे पहले कराया था उसी तरह से, इसलिए जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इसमें फिर से ये सारी की सारी फाइल्स मुझे मिलेंगी। उसके साथ ही मुझे, क्योंकि ये केस मैं पूरी तरह से रन करवा चुका हूँ, इसलिए मुझे सारी फाइल्स वैसी मिल रही जैसे इससे पहले वाले केस में मिली थी, हमने देखा था। और ये स्क्वायर मैश डॉट फॉर्म मैंने एक एम्प्टी टेम्परेरी फाइल बनाई थी, क्योंकि हमारा पैराव्यू केवल डॉट फॉर्म फाइल को ही रीड कर पाता है, सो उसके लिए ये फाइल बनाई थी। और ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पहले वाले केसेस के लिए किया था। चलते हैं पैराव्यू में जाकर के हम दोनों फाइल्स को ओपन करेंगे, और दोनों के लिए हम ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे, और देखेंगे कि मैश फाइन करने के बाद, मैश साइज़ और ज़्यादा स्मॉल करने के बाद चेंजेस हैं कि नहीं है। फॉर दैट नाउ वी आर इन पैराफॉर्म। फॉर फाइल go to open, and this is our cavity folder and this is fine cavity folder। ये cavity folder में जो फाइल है ये वो केस है जो हमने पहले रन किया था, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया है। इसमें हमको cavity डॉट फॉर्म फाइल ओपन करनी है, क्योंकि पैराव्यू में यही फाइल ओपन होगी। इसको कर लेते हैं ओपन। नाउ अप्लाई। नाउ दिस इज आवर cavity or our domain। Now this is surface, we can set it a surface with edges। ये हमारे कोर्स
कोर्स मैथ्स है, ये हमारा फाइन मैथ्स है। एंड क्योंकि हमको दोनों केसेस को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे मैं एक और लेआउट बना लेता हूँ और इसके लिए मैं करता हूँ रेंडर व्यू। नाउ आई कैन सिंपली ओपन माई सेकेंड फाइल, go to file, then open, then find cavity. This is my find cavity folder, and this is my square mesh dot form. मैंने इस नाम से फाइल बनाई थी, तो यही वो फाइल है। इसको ओपन कर लेता हूँ, then apply, and this is showing nothing but pressure, right? So we have to change it to velocity. Now we can simulate it. I'll choose a point where I will analyze both cases. So let's say this is 8 and this is 5 and this is 0, and apply. Now अब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं. So for search plot data over time, enter, okay, apply. So we can see here ये वेव टाइप ऑफ ग्राफ हमको मिल रहा है, क्योंकि जब हम इसको सिमुलेट करेंगे, वी कैन सी यहाँ पर भी हमको एडीज मिल रहे हैं और एक वेव टाइप स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो वही चीज़ हमको यहाँ पे ग्राफ में भी दिख रही है, लाइक दिस. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, उसके ही अकॉर्डिंग जिस पॉइंट पे हमने जो पॉइंट हमने अभी सेट किया था, उस पॉइंट पे टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वी कैन सी हियर. Now we will do same for our second case. Select this case, probe location, set the same point location 1 and apply. Right. Plot data over time, enter, yes, then apply. Now we are getting this data, and from here we can change our parameters and their names and also their colors, right? We can change this, every parameters we can change. Now we are using P and U magnitude here. और मैं दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ में प्लॉट करने वाला हूँ. सो एंड देन वी आर इन लेआउट 3, लाइन चार्ट. वी कैन सी दिस इज लाइन चार्ट व्यू 1, एंड हम यहाँ पे 1 and 2, प्लॉट 1 and 2 हम दोनों को कंपेयर करने वाले हैं. फर्स्ट वी हैव टू चेक कि हम कौन कौन से पैरामीटर्स को यहाँ पे शो करने वाले हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स को हम यहाँ पे नेगलेक्ट करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है एवरेज यू मैग्नीट्यूड एंड एवरेज पी. सो फॉर स्क्वायर मैश, फॉर कैविटी पहले हम चेक करते हैं, तो इसको व्यू कराने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा. एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, दिस ग्राफ वी आर गेटिंग. This is average P states and average U, and now check for next file and we are getting this data. Now it looks very similar, और हम दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों को एक साथ भी देख सकते हैं, तो हम उसको भी ओपन करते हैं. Now we can see this is average P states for first case and this for second case, but in graph there is no change, we can see here. So
We can see for time, if we are increasing time, this is our time, and this is our parameter. So we can see this graph. It assumes constant fluid properties such as density and viscosity. This is appropriate for incompressible flow where density variations are negligible. icoFoam uses piezo pressure implicit with splitting of operators algorithm to advance the solution in time. In OpenFoam, we have different type of solvers based on type of flows and the result we want, like icoFoam, piezoFoam, and rheocentral form, interform. And icoFoam is used for incompressible flow and laminar flows, and piezoform is used for incompressible flow but for turbulent flow, and rheocentral form is used for compressible flows, and interform is used for two-phase flows within interface. Here in the problem we are using icoFoam solver because icoFoam is an incompressible flow solver specially designed for simulating laminar incompressible fluid flows. For the grid independence analysis and the choice of final mesh, we have taken three different types of meshes and check whether these mesh gives same results or not. And after checking these, we select the final mesh for the further analysis. So for first we have taken uh, uh, walls at 1 and rectangular sheet at point 0.1, and for the second we have taken walls at 0.5 and rectangular sheet at 0.1, and for third we have taken walls at 0.1 and rectangular sheet at 0.01. Now we have found that as the uh, fineness increases, the solution gives almost same result. For first and second result, it is almost equal, but for the third and second, it gives almost same result, which we can't find any difference. So we have selected second mesh as our final mesh for further analysis. Also, we have shown the simulation we have find through these different mesh sizes in the video, and after that there is a curve plotted of CD. uh, the simulation we find here is almost same in all three cases, and in the plotted curve there is some difference in first and second mesh, but for the third it uh, it almost similar to the second one. For analyzing the flow, we can use 3D glyphs in our animation. uh, Here we can easily see the flow separation happening at the edges of the rectangular sheet. We can see that streamlines are moving backward at the upper side of the flow. It
and there is a separation above the plate which we can see as blue color marked, and here also we can see formation of vortices which is also moving with the flow and creating a beautiful patterns. We can also see that at the center of these vortices there is also low low pressure and low velocity, and the boundary of the vortices there is high pressure and high velocity. These streamlines are rotating at the vortex. The upper side of the plate shows high velocity and lower side of the plate shows higher velocities. And there are many things we can see in this animation. For analyzing the flow for different Reynolds number, we have taken nu and d as constant and velocity varying, uh, where we have varied v at 2, 4, 6, 8 and 10. These different velocities give us 5 different simulations, and we have plotted the curves of coefficient of discharge and coefficient of lift for these different Reynolds number, and also make animations of their simulations and start analyzing. And now we are showing our results. Earlier all the solutions are at 2 meter per second. Now this animation is showing results for 4 meter per seconds. Now the plot for coefficient of drag and coefficient of lift is plotted here.
This is the result at 6 meter per second. Here the vortex formation is highly turbulent. Here is the plot for coefficient of drag and coefficient of lift. Here again turbulence increases for u equals to 8, and we can see high turbulence frequency in the plotted curve. In the end, for u equals to 10, the turbulence is very high, and plots also shows this. Now we have plotted all the curves traces in a single curve for coefficient of drag and coefficient of lift with time. Also we have plotted coefficient of drag and coefficient of lift with respect to frequency, and got the plotted curves shown in the video.